बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। आज हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस output is the process the data from the CPU. Output devices are used to display and print the result. Monitor or printer are the most common output devices. After processing, CPU gives a output or result on monitor or printer. Those devices are called output devices. ऐसे डिवाइस जो रिजल्ट और आउटपुट को शो करते हैं। तो आपको रिजल्ट कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे या प्रिंटर पे जब आप प्रिंट आउट करते हैं। Those devices are called output devices. Today we discuss about monitor or printer. First one is monitor. The monitor display the most popular and the most viewed form of output. Monitor is another term for display screen. Monitors allow users to view the result of processing. There are two types of monitor. Monitor display the most popular and the most viewed form of output. Output हम लोग व्यू करते हैं और मॉनिटर जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है हमारा, जस्ट लाइक टेलीविजन। मॉनिटर आर ऑफ टू टाइप्स। हमारा मॉनिटर दो टाइप का है। फर्स्ट CRT मॉनिटर। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। CRT monitors consumes more electricity. These are bigger in size and heavy in weight. CRT monitor full form is cathode ray tube. It consumes more electricity. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है CRT monitor. And these are bigger in size and heavy in weight. ये साइज बहुत बड़ा होता है और वेट भी इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मॉनिटर इज LCD मॉनिटर। LCD monitors. LCD stands for liquid crystal display. LCD monitors consumes less electricity. These monitors have lower weight and can be handled easily. They have a crisp, flicker-free display. LCD monitors full form is liquid crystal display and it consumes less electricity. बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम करता है। एंड इट इज स्मॉलर इन साइज एंड लोअर वेट। साइज छोटा होता है इसका और वेट भी कम होता है। इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है, गुड। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। A printer is also an output device that gives the result in printed form. There are three common printers. Printers is also output device that prints our result in hard copy, like your books, magazines, papers are printed by printer. When it is stored
In our computer, this file is called soft copy. When it is printed with the help of printer, it is called a hard copy of output or result. First type of printer is dot matrix printer. This printer prints each character separately. These printers use print head containing 9 to 24 pins. These pins produce patterns of dots on the paper. Dot matrix printer prints each character separately. ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. इसमें पिन्स लगे होते हैं, 9 पिन हो सकते हैं, 9 to 24 पिन्स. इस पिन की मदद से ये प्रिंट करता है कैरेक्टर को इन डॉटेड फॉर्म. नेक्स्ट प्रिंटर इज इंकजेट प्रिंटर. दिस प्रिंटर forms characters on the paper by spraying ink from tiny nozzles. The ink is absorbed into the paper and dries instantly. Different color of ink can also be used. It produces high quality print. Next printer is inkjet printer. It forms a character on paper by spraying ink from tiny nozzles. ये इंक को स्प्रे करता है नोजल के द्वारा और आपके कैरेक्टर्स को, सेंटेंस को प्रिंट करता है पेपर पे. इसमें आप कलर प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, और इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होता है, अच्छा होता है प्रिंटिंग क्वालिटी. नेक्स्ट type of printer is laser printer. This printer produces images on paper by directing a laser beam. Many home use laser printers can print 8 pages per minute. Commercial printers are much faster and print about 200 pages per minute. Next printer is laser printer. It prints with the help of laser beam and its printing speed is very high. It can print in general 8 pages per minute and commercial printers print about 200 pages per minute. 1 मिनट में ये 200 पेज प्रिंट कर सकता है. Next topic is Central Processing Unit, CPU. The most important part of a computer is the CPU, Central Processing Unit. CPU is the pathway between the input and output devices. It acts as a juicer machine. As you put fruits in the jar, juicer grinds all fruits before extracting juice. Likewise, an information input has to be processed in the CPU before displaying the output. It consists of the following 3 subunits: memory unit, control unit, and ALU, arithmetic and logic units. Input device give input to the CPU. CPU process them with the help of 3 units: memory unit, control unit, and arithmetic or logic unit. Then give output or result. These are the functions of our input-output process cycle. In the given examples, here taken examples to understand the work of CPU. Like a juicer machines, it take fruits and process them and finally give output as a juice, as the same work of our CPU. All students read the chapter first very carefully
and if you have any doubts then ask. Thank you.